प्यारे दोस्तों, सफल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में अपन वर्ड प्रॉब्लम्स का दूसरा पार्ट देख रहे हैं, जिसमें मोस्टली अपन क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पीड एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम प्रॉब्लम, रिवर एंड बोर्ड प्रॉब्लम, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी सम मिसलेनियस क्वेश्चंस। So let's take up the first question. The speed of a boat in still water is 15 kmph. It can go 45 km upstream and return downstream to the original point in 6 hours 45 minutes. Find the speed of the stream. Important question है, CBSE 2020 में 2018 में similar kind of questions पूछा गया है 4 मार्क्स के लिए। आइए समझने की कोशिश करते हैं कैसे करेंगे। So speed of the boat is given to us, so let us write that. So speed of boat, generally I denoted by B, so that is given as 15 kmph. Okay, now speed of a stream is asked. Speed of stream, तो स्ट्रीम का स्पीड अपने को नहीं पता, so let me take as S kmph. Okay, now we know that whenever the boat goes in downstream, so the boat speed plus stream speed gets added. So downstream speed, if I need to write, so downstream speed, so it will be B plus S, that is basically 15 plus S kmph. Okay, वैसे ही अगर आप अप स्ट्रीम की बात करते हो, so the boat goes against the stream. Okay, so अप स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाती है वो होती है B minus S, so that means 15 minus S. Now what they are telling is 45 km it goes in upstream and return to the same point in 6 hours 45 minutes. So time taken in upstream, so T upstream, okay, and time taken to travel in downstream, so T downstream, so this is given to us as 6 hours 45 minutes. So इसको अपने को आवर में लिखना है, so 6 hours and 45 minutes I can write 45 by 60 hours. Okay, now time क्या होता है, distance by speed. So अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना है 45 एंड स्पीड कितनी है 15 माइनस एस, डाउन स्ट्रीम अगेन डिस्टेंस इज 45 ओनली एंड स्पीड वी हैव इज 15 प्लस एस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6/3/4. सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंप्लीफाई दिस फर्दर. सो 45 मैं कॉमन लूंगा, सो 1/15 माइनस एस प्लस 1/15 प्लस एस, इसको अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सो 6 4 जा 24 प्लस 3 27/4. ओके, सो फर्दर इफ आई सिंप्लीफाई, सो 45 दिस आई गेट 15 प्लस एस प्लस 15 माइनस एस. नाउ डिनोमिनेटर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सो 15 माइनस एस एंड 15 प्लस एस, सो 15 स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर. सो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ a प्लस बी, ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दिस बिकम्स 27/4. सो यहाँ से आप देखेंगे 45 विल रिमेन एज इट इज. नाउ इन द ब्रैकेट प्लस एस माइनस एस विल गेट कैंसल एंड 15 प्लस 15 इज 30. नाउ डिनोमिनेटर वी हैव 15 स्क्वायर, दैट इज 225 minus s square, and right hand side we have is 27/4. Okay, so this I'll simplify, cross multiplication, so 4 into 45 into 30 equals 27 into what, 225 minus s square. तो यहाँ से आप देखेंगे I can cancel 9 5s are 45 and 9 3s are 27, and again 3 10s are what, 30. So here I'll have 10. So effectively जो left hand side हो रहा है 4 into 5 into 10, so that is 200.
So 200 equals what? 225 minus s square. So s square को इधर ट्रांसपोज करेंगे, so it will become plus s square. 200 will go that side, so 225 minus 200 कितना मिल जाएगा आपको? 25. So s स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो अपने पास यहाँ से जो s की वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 25, so which is plus minus 5. अब बात किसकी हो रही है? बात स्पीड की हो रही है. So we know that speed cannot be negative. तो क्या लिखूंगा? s equals 5 km/h. That means speed of stream is what? 5 km/h. अच्छा सवाल था. अगला सवाल लेते हैं. ये सवाल 2020 में सिमिलर सवाल आया है और 2018 में भी आया है, तो ये भी कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है. सवाल में ये बोल रहा है, ए प्लेन लेफ्ट 30 minutes लेट देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम. It had to increase its speed by 100 km/h from the usual speed. So find the usual speed. So usual speed पूछी है, तो मान लेते हैं usual speed. So let the usual speed be s km/h. मैंने क्या माना है? usual speed मैंने मान लिया है s km/h. Now distance is what? 1500 किलोमीटर, right? It's given in the question. तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं यूजुअल टाइम, सो यूजुअल टाइम इसको कितना लगता होगा? सो टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, सो यूजुअल टाइम विल बी 1500 बाय एस आवर. ओके, सो अगर फ्लाइट टाइम से है या प्लेन टाइम से है तो वो कितना टाइम लेगा? 1500 by s, where s is the speed. Now that particular day what has happened? That particular day plane left 30 minutes late, and in order to reach time it has increased the speed by 100 km/h. So on that specific day speed is what? 100 km more. So speed becomes s plus 100. Speed कितना हो जाएगा? s plus 100. So time taken क्या हो जाएगा? Distance तो सेम ही रहा है. So that day time taken will be 1500 by s plus 100. अब क्या बोल रहे हैं कि वो आधे घंटे लेट निकला है. इसका मतलब दिस टाइम इज हाफ एन आवर लेस देन द यूजुअल टाइम. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ आई विल सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो व्हाट आई विल गेट? 1500 by s minus 1500 by s plus 100 is what? 30 minutes. अब 30 minutes को यहाँ पे अपने को आवर में लिखना है, सो 30 by 60, सो दैट इज 1/2. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर यहाँ पे आप टाइम आवर में नहीं लिखते हैं तो फिर से आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर देंगे. सो 1500 अगेन आई विल टेक कॉमन, सो 1/s minus 1/s plus 100 equals 1/2. सो यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास मिलेगा s plus 100 minus s upon s square plus 100 s equals what? 1/2 and into 1500, that means 1/3000. ओके, तो ये प्लस s और माइनस s तो कैंसिल हो जाएगा. सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन व्हाट आई विल गेट इज s square plus 100s. Now here we'll get 3 lakh, that will go that side, it will become minus 3 lakh. So 3 followed by how many zeros? 5 zeros. So equals what? 0. So इसको आप चाहें तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड. So we can see,
6 5s are 30, so maybe 600 and 500 I can take it as factor. So s square plus 600s minus 500s minus 3 followed by how many zeros? 5 0, so equal to 0. So यहाँ से s common मैं लूँगा तो I'll get s plus 600 minus 500 I'll take common, so I'll get again s plus 600. So the two factors what we'll get is s plus 600 into s minus 500. तो यहाँ से s की दो वैल्यू अपने को मिलेगी. सो s इक्वल्स या तो माइनस 600 और प्लस 500. तो अब अपने को पता है बात किसकी हो रही है, स्पीड की बात हो रही है. सो स्पीड इज अगेन नॉट नेगेटिव, सो द स्पीड विल बिकम 500 किलोमीटर पर आवर. सो दैट मीन्स द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन इज 500 किलोमीटर पर आवर. इट वॉज ए नाइस क्वेश्चन. सो स्पीड टाइम का कंसेप्ट है तो आपको ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम और टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड. So the next question we have on the screen. So this is a pipe and cistern based problem. So ये भी अच्छा सवाल है, इसको समझते हैं. So two pipes together can fill a cistern in 3 1/13 minutes. If one pipe takes 3 minutes more than the other to fill the cistern, find the time in which each pipe would fill the cistern. So situation को visualize करते हैं. अभी देखो मैंने एक सेटअप ले रखा है. सो यहाँ पे दो पाइप अपने पास हैं और मान लो ये सिस्टर्न को ये लोग फिल कर रहे हैं. सो अगर मैं बोलता हूँ कि टाइम टेकन बाय दिस थिकर पाइप टू फिल द सिस्टर्न इज 10 minutes. सो थिनर पाइप विल टेक मोर टाइम टू फिल, राइट? एंड हाउ मेनी मिनट्स मोर एज पर द क्वेश्चन? सो एज पर द क्वेश्चन इट इज टेकिंग t plus 3 minutes. Okay. So the thicker one is taking t minutes, so thinner one will take more time, that is t plus 3 minutes. Okay. So now time taken by pipe 1, let's say मैं इसको pipe 1 बोल रहा हूँ और इसको 2 बोल रहा हूँ. So pipe 1 is t minutes. Time taken by pipe 1 is what? t minutes. तो टाइम टेकन बाय पाइप 2 कितना हो जाएगा? ऑलरेडी आई हैव रिटन इज t plus 3 minutes to fill the tank, correct? और to fill the cistern. Now इसमें क्या होता है, यूनिटरी मेथड आपको लगाना होता है. So I'll just take an example. If I am finishing a work in 10 days, so एक दिन में उस वर्क का कितना मैं कर पाऊंगा? 1/10. So if this pipe 1 is filling the cistern in t minutes, so in 1 minute it will able to fill 1/t part of the tank. So part of the cistern filled by pipe 1 in 1 minute will be how much? 1/t. So उसी तरह से part of the cistern filled by pipe 2 in 1 minute वो क्या हो जाएगा? 1/t plus 3. So ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है. This is very very important. अब क्या बोल रहे हैं कि two pipes together can fill a cistern in 3 1/13 minutes. Okay. So part of the cistern filled by both the pipes in 1 minute, ये कितना हो जाएगा? So ये फ्रैक्शन मैं देख रहा हूं. So 3 1/13, that means 40/13. So 1/40/13. 1 by what? 40/13. So what I am writing is together they are filling in 3 1/13. That means 40/13 minutes. So in 1 minute together they will fill what part of the tank? So 1/40/13. So that is basically 13/40.
सो अब यहां से अपने को 1 minute of first pipe plus 1 minute of second pipe equals 1 minute work of both the pipes. So what I'll write, 1 by t plus 1 by t plus 3 equals what, 13 by 40. ठीक है, so this is given as per the question. तो यहां से फिर से सिंप्लीफाई करते हैं. so LCM लेके, so t plus 3 plus t by t square plus 3t equals 13 by 40. so क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, so अपने को मिल जाएगा 40 into 2t, that's 80t, and 40 into 3, that's 120. इधर अपने को मिलेगा 13t square plus 39t. so effectively what I'll get, 13t square, 80t will go that side, so minus 80t and plus 39t is minus 41t, and this 120 will go that side, so that will become minus 120, so equals 0. so here we have big numbers, so maybe I can directly go by formula method. so t I can write minus b, that means minus of minus 41 plus minus b square. now b square, that means 41 ka square, so minus 41 का square minus 4ac, that means minus 4 into 13 into 120. okay, so यहाँ से अपने को मिलेगा and 2a, that is 2 into 30. so effectively this will become 41 plus minus, the 41 square is 1681. okay, यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, so I can write maybe plus, so 13, 4 let it be as it is for the time being. so 13 into 0 is 0, 13 2 ja 26, so 6 carries 2, and 13 1 ja 13 plus 2 is what, 15. okay, so this will become by 26. so यहाँ से फिर मिल जाएगा 41 plus minus. now this will become 15 4 ja, so 6000, so 6240, so 6240 plus 1681, so this will become 7921. ये कितना हो जाएगा, 7921 by 26. तो यहाँ से अब 7921 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, so that will become 7921, right? so 8, so 9, so 89 will get. okay, so plus minus 89 by what, 26. so once we will consider positive sign, so 41 plus 89, that is how much, so 130. so 130 by 26. if I'll consider negative sign, I'll get now 89 and 40, so 9 minus 1 is 8, and 8 minus 4 is 4, so minus 48 by what, 26. so since we are looking for time, so this value I'll reject, and 130 by 26 I'll consider. so 130 by 26 is basically what, 5 minutes. okay, so that means this pipe is taking what, 5 minutes, and of course this is taking t plus 3, so that means 5 plus 3, that means 8 minutes. okay, so the answer will become 5 minutes and 8 minutes. ठीक है, so मे बी कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट प्रोसेस आपने समझनी है कि अगर if anyone is doing a work in, let's say, x days, so that particular person will finish the work, I mean part of the work in one day is 1 by x. तो वैसे ही अगर ये t मिनट्स में फिल कर रहा है, so 1 मिनट में कितना पार्ट फिल करेगा, 1 by t. so this logic you have to keep in mind. so similar concept is applied for time and work problem, which you can see on the screen. so यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है. okay, so ये बोल रहे हैं कि A takes 10 days less than time taken by B to finish a work. so पहले मैं assume करूंगा time taken by
B to finish the work is T days. मैं क्या assume कर रहा हूँ कि B जो है वो कितने दिनों में काम को खत्म कर रहा है? T days में. तो as per the question, time taken by A to finish the work is what? T day less, so it will become T minus 3 days. Sorry, T minus 10. So T minus 10 days. Okay. Now they are telling both can finish the work in 12 days. So directly मैं लिख सकता हूँ. So according to question, now both they are doing the work in what? 12 days. So 1 day's work of B, that is 1 by T, plus 1 day work of what? A, that is 1 by T minus 10, equals what? 1 day's work of both. So that means they are finishing in 12 days. So in 1 day they will finish what? 1 by 12 of the work. So यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको इक्वेशन लिख रहा हूँ. So आप एग्जाम में चाहें तो लिख सकते हैं. So part of the work done by B in 1 day is 1 by T. Part of the work done by A in 1 day is 1 upon T minus 10. And part of the work done by both in 1 day is 1 by 12. And then you can write this equation. So then it's all about solving. So T minus 10 plus T divided by T square minus 10T equals what? 1 by 12. So cross multiply करेंगे. So 12 times of 2T minus 10 equals T square minus 10T. तो यहाँ से मिल जाएगा 24T minus 120 equals T square minus 10T. So standard equation जो अपने को मिलेगी, I can write it here. So T square minus 10T and minus 24T, so minus 34T and plus 120 equals what? 0. तो यहाँ से आप चाहें तो फैक्टराइज कर सकते हैं. So T square minus 30T minus 4T, okay, and plus 120 equals what? 0. So T I'll take common, so T minus 30, and minus 4 I'll take common, so T minus 30 equals 0. So this will give T minus 30 into what? T minus 4. So the value of T is coming 30 or what? 4. So now time taken by B will be either 30 days or 4 days. But again you need to be smart here. Now A is taking what? 10 days less than B. So if B takes 4 days, A takes 4 minus 10, which is minus x, और time तो कभी negative नहीं हो सकता. So that's why this value 4 I will what? Reject. So time taken by B will be what? 30 days. So time taken by B to finish the work will be 30 days. So इस तरह से आप प्रॉब्लम को आसानी से कर सकते हैं. So the next question I have taken from commercial mathematics. So ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से. इसमें भी अपन यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट लगाते हैं. So question is saying a shopkeeper buys a number of books for rupees 80. If he had bought 4 more books for the same amount, each would have cost him rupees 1 less. So how many books did he buy? So इसमें assume अपन करते हैं कि let's say उसने कितने books खरीदे? X. So let's the book bought is X. ठीक है. So total 80 rupees में X books इसने खरीदे हैं. So what I can write? Cost of each book. Cost of what? Each book will be what? 80 by X. Now if we had bought 4 more books, so second condition, if X plus 4 books would have been
bought, अगर उसने कितनी किताबें खरीदी थी, x + 4, तो इस केस में कॉस्ट ऑफ ईच बुक क्या था, कॉस्ट ऑफ ईच बुक will be 80 by x + 4. And as per the question, in this case each book cost him ₹1 less. So that means according to question I can write, so according to question what I'll get, 80 by x minus 80 by x + 4 is what, ₹1 less. So this again we can simplify. So 80 1 by x minus 1 by x plus 4 equals what, 1. So cross multiply करेंगे and simplify करेंगे. So left hand side will have x plus 4 minus x by x square plus 4x. Right hand side will become 1 by 80. So plus x and minus x will get cancelled. So on cross multiplication, x square plus 4x, now 80 into 4 is 320, that will go that side, so it will become minus 320, so equals 0. So this you can solve again either by factorization or formula method. So I can see 4 I need, so 16 and 20 I can think of. So x square plus 20x minus 16x minus 320 equals 0. So if I'll take x common, so x plus 20, if I'll take minus 16 common, so again x plus 20, so equals 0. So दो फैक्टर अपने को क्या मिल जाएंगे, x plus 20 and x minus 16. So यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही है -20 और +16. चूंकि x अपने आप में क्या है, काउंट ऑफ बुक, so count of book can't be negative, so -20 I'll reject. So x will be how much, 16. So the number of books did he buy will be what, 16. So that's going to be the answer for this question. The next question is a practical question, very realistic question I have taken on the screen. So let us see how to do this. Now in this question it is said that 1/4 of a group of COVID-19 patient was seen in Delhi. Twice the square root of the group had gone to Chennai and remaining 15 patients were spotted in Mumbai. So find the total number of COVID-19 patients in the group. So अपन इसमें assume करते हैं total patients x. Total patients क्या assume करते हैं, x. So out of x, how many has gone to Delhi? So अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ Delhi, so they are telling 1/4 of the group. So that means Delhi, how many people were seen? So x by 4. Twice the square root had gone to what, Chennai. So अगर मैं चेन्नई की बात करता हूँ, so यहाँ पे कितने लोग गए हैं, so twice the square root of total number, that means 2 times of root x. And how many people were seen in Mumbai? So that is 15. Okay, so this many people were seen in Mumbai. So just I am visualizing the situation. So total x people were there, so x by 4 in Delhi, 2 root x in Chennai, and remaining 15 in Mumbai. So I know all these three added together should give me what, x. So I'll get x by 4 plus 2 root x plus 15 should give me what, x. So इसको simplify करेंगे, so 2 root x equals x minus x by 4 minus 15. So cross multiply करेंगे, so 2 root x, पहले right hand side simplify कर लेते हैं. So I'll get 4x minus 6, that is 3x minus 60 by 4 I'll get. So on cross multiplication I'll get 8 root x equals 3x minus 60. अब ये इक्वेशन अपने आप में तो क्वाड्रेटिक नहीं है, बट इसको क्वाड्रेटिक बनाया जा सकता है. एक तरीका है कि आप स्क्वायर कर दो बोथ साइड,
but that will increase your calculation. So what you do is you replace root x by what? Let's say some variable y. So this will give me x equals what? Y square. तो x की वैल्यू y स्क्वायर हो गई या रूट x की क्या? y. सो इक्वेशन अपने पास क्या बन जाएगी? 8y equals 3y square minus 60. So what I'll get? 3y square minus 8y and minus 60 equals 0. So 63 is a 120. 180. Correct? So we have to think of factors where difference is 8 and so 18 and 10. Correct? So 63 is a 180 and 18 and 10 is 180. Okay. So 3y square. So minus 18y plus 10y minus 60 equals what? 0. So splitting the middle term I am using here. So 3y I will take common. So y minus 6 plus 10 I will common. So y minus 6 equals what? 0. So what I will get? 3y plus 10 and y minus 6. So यहाँ से अपने को मिलेगा y equals what? minus 10 by 3 और 6. अब ध्यान रखना है कि y की जो वैल्यू अपने पास है that is a square root of x and the square root of any quantity is what? Positive. So this value I'll reject and 6 I'll select. So I'll write since the square root of x is y and that is what? 6. So squaring both sides x I'll get what? 36. That means the total number of patients in the group was 36. So total patients in the group equals what? 36. So total 36 COVID-19 patients were there in the group. So इस तरह से practical situation भी आपको दिया जा सकता है. So you need to analyze the situation, frame the equation and then solve it. So we have covered good number of example. So after this I have given some 6 practice questions. They are very good questions. You can attempt it, and also I have given answers which you can see on the screen in white. Correct? Everywhere I have given. So you can work it out. You can verify the answers. If you are not getting, you can put a comment in the comment section. So then I'll cover it, that specific question. So thank you so much for watching Safal. Please do like, share and subscribe the channel.